and k. Now student, can you tell me what is common ratio? How can we find common ratio? As you know, the first term is a. Look at this. First term is a, and that is given to you. And what is AR? Student, what is AR? This is second term. Hello, second term. AR is to K Yes. upon K plus 12. AR is equal to second term. We understand AR is equal to second term. And A is equal to 2k plus 1. So second term is also given, and 2k plus 1 is also given. So there are two methods. There are two methods right now that you can take the nth term and input the values. Okay. And you can find the common ratio k plus 12 divided by 2k plus 6 and k upon 12, k upon k plus 12. They will be both equal. They will be both equal. Now you tell me, a is equal to 2k plus 1 and AR is the second term. Okay, now I'm writing a term over here. AR is equal to, what is second term? Can you tell me what is second term? K plus 12. अगर आपको यहां तक समझ आ गया तो मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं. अगर यहां तक समझ आया है तो Yes, sir. समझ आ गया. AR K plus 12 है क्योंकि A जो है ना फर्स्ट टर्म है. इसमें कलर चेंज करके मैं आपको बता देता हूं. अभी कलर चेंज करके मैं अभी आपको बता देता हूं. ये जो है ना, ये फर्स्ट टर्म है. फर्स्ट, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है. तो मैंने क्या लिखा? मैंने सेकंड टर्म इज इक्वल टू k प्लस 12. अब मुझे बताएगा कोई a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? कोई बताएगा बेटा a की वैल्यू क्या आएगी? 2k plus 6. 2k plus 6. तो अब आए 2k plus 6 multiply by r is equal to k plus 12. तो कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा? कॉमन रेशियो k plus 12 अपॉन k plus 2k plus 6. अब यही तो मैंने कहा था कि कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? अगली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा कॉमन रेशियो आ जाता है. तो k plus 12 इसको ऊपर ले जाता हूं. वेट, आपने ऊपर लिख रहे हैं ना साथ साथ? ऊपर ले जाऊं? k plus 12 अपॉन 2k plus 6. अब ये आ गया मेरे पास कॉमन रेशियो r. अच्छा, r और भी आ सकता है. कोई बताएगा r और भी कैसे आ सकता है? कॉमन रेशियो तो सेम होता है ना सबका. अगर मैं जिस तरह k plus 12 को 2k plus 6 से डिवाइड किया तो जो रेशियो आया वही रेशियो k अपॉन k plus 12 के बराबर होगा. यानी r जो है, इधर देखिए, इधर r इज इक्वल टू k अपॉन k plus 12 है क्योंकि कॉमन रेशियो तो सेम है ना. तो व्हेन कॉमन रेशियो इज सेम, तो आई कैन इक्वेट दीज टू इक्वेशन. ओके, r is equal to, so I equate and can you find the value of k? So k upon k plus 12. Look at this student. K upon k plus 12 is equal to k plus 12 upon 2k plus 6. चलें भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और मुझे बताएं k की वैल्यू क्या आ रही है. शाबाश. और उन्होंने बोला है कि ऑल द टर्म्स इन द प्रोग्रेशन आर पॉजिटिव. अगर यहां से k क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है
So we will not consider negative value from here. We will not consider negative value because we are going to consider all values in the progression are positive. Okay, so we will take the positive value of k. Okay, now hurry up please. जी स्टूडेंट देख लें के की वैल्यू क्या आ रही है, जल्दी बताएं जरा। अगर आप इसको करेंगे तो के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। देखिए सारे स्टूडेंट, क्या के की वैल्यू 24 आ रही है? जी क्रॉस मल्टीप्लाई करके के की वैल्यू आपने चेक की? जी अनाया और ईमान, हमेश एंड अदर स्टूडेंट्स प्लीज। जी बता दो दें आप कर रहे हैं कितना, सर कहाँ कर तक रहा हूँ पहुंचा कर है? रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। सर कर रहे हैं 2 क्वाड्रेटिक मिनट। इक्वेशन बन गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी बनी, शेयर करें जरा। सर के की वैल्यू 24 आ रही है। वेरी गुड हमजा जफर, इसकी वैल्यू आ जाएगी इधर। तो हमजा जफर आपकी इक्वेशन क्या बनी? 2k² प्लस 6k, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? k² प्लस 24k प्लस 144। हमजा जफर कुछ ऐसा ही आ रहा है आपका भी? 2k² में से एक k² निकाल दिया तो k² रह जाएगा, और प्लस 6k तो ये माइनस 624k, तो इट वुड बी माइनस 18k, राइट? माइनस 18k हो जाएगा, and then 144 will come to the left hand side, it will become minus 144. Hamza Zafar, how did you break the middle term? It is going with middle term breaking or doing with other? Or you use formula? What? How did you find k? See, if we multiply by 24 by 6,
it will become 144. So what are the factors? A square. Azan is going on, so I can wait for it Sir, the for 1 minute. factors would Yes, Iman, you were saying something. Sir, I was telling the factors. I'm done the question. Yes, Iman, your answer is also 24, right? Yes, sir. No, what is the formula of sum to infinity? We have, we have A. What is A now? A, when K is 24 and first term is 2K plus 6. So what is K? What is the value of A? So now look at this. A is equal to A is equal to 2K plus 6, right? And now the value of K is 24. So what is A? Yes, student, what is A? 54. A is 54. So what is the formula to find sum to infinity? What is the formula? But in formula, we have to put R as well. So what is the value of R? 2/3. How can we find R now? Can anybody tell me? Sir, by putting the values in the K. Yes, in common ratio. And you know what is common ratio? From common ratio, you look at this. AR is equal to K plus 12. In this equation, let me mark this equation.
Dear student, if in this equation I put the value of A and K, I will find R. What is common ratio? So AR is equal to K plus 12. Okay. Or the simple thing is, yes, this is, I think this is simple. You can also put in this formula. You can also put over here the value of K only. Anywhere you can put K. You can also put over here. I think if you put value of K here, so it will be very easy. So Hamza Zafar, can you please tell again what is R? R is equal to K upon K plus 12. Okay. R is equal to K upon K plus 12. So I can write R is equal to K upon K plus 12. Yes, student, what is the value of K? 24. 24. 24 plus 12, how much? 36. 36. What is the value of R now? 0.67. 2/3. No, we can only write fraction. 36 upon 54. Okay. R is equal to 2 upon 3. Okay. Sir, why Now, can't we what take is the value in decimal? Because if you take the in O level mathematics, when we round off value first and we then input in the coming step, because this is not our final answer, we only round off the answer when we write our final answer, then we round off. Before, the value which is being input in the formula sum to infinity, we are moving toward the sum to infinity. For this we need R. So if we round off the value of R, it will affect this answer of, it will affect my final answer. Are you getting? Okay. This is the reason we Yes, don't sir. round off before. So we round off the answer when it comes at the end. So now take R of R2 upon 3. Now can anybody tell me the formula sum to infinity? We have R, we have A. So can anybody tell me the formula sum to infinity? Yes, student? A upon upon 1 1 minus r. minus R. Okay, let me write sum to infinity. I told you infinity symbol is this. A upon 1 minus R. 1 minus r. all right. Student, today you are cooperating very well. It shows the good gesture of student who are learning ad math. Okay, student, now look at this. We have value of A. We have value. This is symbol of infinity. We have value of A, that is 54. 1 minus 2 upon 3. Now, student, please simplify this. Using your calculator, please do it. Hurry up. Sir, What is 162. coming? Sir, What I is found coming? the final answer. 162. Wow, very good. Answer is 162. Great. Very good. This is correct answer. So student, look at this. Today you have understood that how we start the question. This is examination style question. We don't have A. For A, we need find the value of K. So first we find the value of K. Then we need R, because in sum to infinity, we have to put the value of A and R. So first we find R.
R we find by inputting the value of K. So we find R. Finally, when we have values of A and R, then we apply the formula sum to infinity, and then we did this. And I observed some of you were confused in the beginning. Why were you confused? Can you please share your idea, Iman? When I asked you the question that how can we find R? So you said, sir, I don't get it. Value of K, sorry. Because you don't know how to find R. But I asked you, how can we find the value of K? So can Iman, you tell me that what confusion comes in your mind? Sir, at that time I was a little confused about the procedure. But after when you told the procedure that it would be according to the first we'll find the common ratio, then I got it, understood the answer. That's great. Yes, Anaya, what about you? सर मुझे वो लाइक पहले तो मुझे वो समझ नहीं आता, जैसे लाइक के अपॉन के प्लस 12 जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा था, बट फिर आपने समझाया तो मुझे फिर समझ आ गया, इसलिए मुझे के की वैल्यू समझ नहीं आ रही थी। हाँ, तो एक बात आपने और ज़हन में रखनी है, कब ये इसी तरह अननोन वेरिए दे देगा, के आर पी क्यू दे देगा कुछ भी, तो आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि इनका कॉमन रेशियो तो सेम होता है। तो अगली टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड करते हैं तो कॉमन रेशियो आ जाता है, ठीक है। और आप उसको सेकंड टर्म के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, हर अगली टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड करने से हमारे पास कॉमन रेशियो आता है। तो आप यूं कर लें, k + 12 अपॉन 2k + 6, ठीक है, ये एक रेशियो हो गया। ये इसी के इक्वल है k अपॉन k + 12, बिकॉज दिस इज ज्योमेट्री प्रोग्रेशन। इन ज्योमेट्री प्रोग्रेशन द रेशियो of first two terms, but the thing is that second term should be numerator and first one should be denominator, are equal. That is why I put R is equal to, that is why I also put R is equal to k upon k plus 12. Okay, student, now I am giving you the questions in WhatsApp group, all exam questions, and AP and GP are also involved. Today we did the questions of geometry progression, of exam style questions, okay, and inshallah next time I am giving you assignment of AP GP. You will be sending me individually on my WhatsApp. No matter you sending me on Teams, you can send me on my WhatsApp individual your work related to series. So I am sending you this सर दोबारा this क्वेश्चन picture. बताइएगा। Yes, Anaya. सर रिपीट कीजिएगा जो आपने बोला। मैंने कहा मैं व्हाट्सएप पे आपको एग्जाम के क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, एपी और जीपी के। तो मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, आप वहां से असाइनमेंट करके इंडिविजुअली मुझे सेंड कर दीजिएगा। कल क्लास इंशाल्लाह 9:25 पे होगी और मॉर्निंग तक तो मुझे नहीं लगता कि आप काम कर सकेंगे, तो इसको फिर नेक्स्ट क्लास तक ड्यू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हैं। तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और ये रिकॉर्ड भी हो गया है ये लेसन, और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको ग्रुप के अंदर भेज रहा हूँ, और इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको अभी इसका लिंक भी आपको सेंड कर देता हूँ। तो आप देखिएगा कि किस तरीके से आप पहले कंफ्यूज हो रहे थे, और उसके बाद जैसे आपको पता चला कि कॉमन रेशियो सेम होता है सबका, तो फिर आपने उसको उस तरीके से कर लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट, इज देयर एनी प्रॉब्लम सो फार? ठीक है सर। एनी क्वेरी यू वांट टू आस्क? अदरवाइज वी विल एंड द क्लास। Sir, there is one request. यस, सर कल की क्लास भी हम 7:30 पे ही कर सकते हैं? लेकिन कल की क्लास हमारी 9:25 से 10:45 है, तो अगर हम 7:30 पे करेंगे तो फिर हमें टाइम कम मिलेगा।
और सैटरडे है तो सैटरडे में शाम में सब लोग कहीं ना कहीं चले जाते हैं, तो हमने स्कूल की तरफ से ये हमें टाइम मिला हुआ है, स्कूल का टाइम है ये जो 2 क्लासेस है ना, ये मैंने अपने तौर पे ये रखी हैं Okay. आपके लिए 7:30 पे। मुझे सूटेबल टाइम है मेरे लिए, मैं अवेलेबल हो जाऊं आपको और पढ़ा सकूं, तो मैंने आपको तो ये टाइम दे दिया है। और सैटरडे का टाइम तो स्कूल की तरफ से 9:25 till 10:45 है, उसमें हम बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। आप कोशिश करें, आप जल्दी उठ जाएं Okay. और क्लास कर लें, क्योंकि शाम में बहुत सारे लोग चले जाते हैं। सैटरडे है तो सैटरडे नाइट भी मनाते हैं, कोई फैमिली के साथ बिजी होते हैं, तो इसलिए मॉर्निंग में ही आप यूं समझिए आप स्कूल हैं, क्योंकि आपको पढ़ना तो है, जाहिर है एडमेस का काफी सिलेबस हमारा बाकी है, तो इंशाल्लाह वो ये जल्द से जल्द कवर हो जाएगा। एनी अदर क्वेश्चन यू वांट टू Okay, आस्क रिलेटेड टू arithmetic progression and geometric progression? I think it's clear. Yes, sir. Sir, मेरे को Okay, एक और student. question. Now we are okay, student. Now we are ending up our class. Thank you very much for your cooperation. All of you have done very well today. Thank you, those who answered me promptly, and they showed their enthusiasm, and they worked very nice. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.